Hello everybody, this is Ankush Bahuguna. Welcome to my YouTube channel. I think I want to start the video by saying a very genuine sorry to my YouTube audience क्योंकि 5 साल से मैंने चैनल खोला and people have been with me for 5 years but मैं रेगुलरली कंटेंट नहीं डाल पाया यूट्यूब पे फॉर वेरियस रीजंस, विल गेट इनटू दैट लेटर. बट मैंने बहुत सारे मेकअप और स्किन केयर पे शॉर्ट्स डाले अपने चैनल पे. द रिस्पॉन्स हैज बीन अमेजिंग एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू दिस. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट लॉन्ग फॉर्म ब्यूटी ट्यूटोरियल्स. सो टुडे आई वांट टू शो यू हाउ आई डू माय मेकअप करंटली. दिस इज माय करंट रूटीन. दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई एम करंटली यूजिंग. या लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहले ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी स्टार्ट इज स्किन केयर. दिस इज द डॉट इन की सीका कामिंग जेल मॉइस्चराइजर. आई एम जस्ट गोना अप्लाई सम ऑन माय फेस. I don't know, मुझे बहुत एक्ने हो जाता है यार. सो आई प्रिफर अंडर मेकअप, आई प्रिफर these calming moisturizers. इसमें सीका है, so that's great. There's so much I want to say, but धीरे धीरे one thing at a time. If you want to know about skincare basics, how to choose your skincare etc., उसके लिए मैं अलग videos बनाऊंगा. Let's get ahead, okay? This is the benefit precisely my brow wax. It's like a mascara for your eyebrows, but इसमें थोड़ा सा wax भी होता है. So your eyebrows stay in place. मेरी eyebrows बहुत ज़्यादा patchy नहीं है, तो मुझे fill करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So I just use this wand to just brush them up a little bit. Guys, मेरे YouTube videos बहुत लंबे होंगे क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ और मैं बहुत बातें करता हूँ. I make sure that the arch of my brow is very well defined क्योंकि उसी से आपकी आंखों को ऐसे वो एक लिफ्ट मिलता है. ये कुछ बाल हैं जो अपनी ही अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनका मैं कुछ अभी कर नहीं सकता हूँ. गाइस, बुढ़ापा आ रहा है. मेरी मूंछें सफ़ेद हो गई हैं. दिस एक्चुअली नॉट बुढ़ापा, दिस इज स्ट्रेस. मुंबई शिफ्ट होते ही मुझे 2 साल हुए हैं और 2 सालों में मेरी आधी मूंछ सफ़ेद हो गई है, पता नहीं क्यों. अब बारी है हमारे प्राइमर की. इन सिंपल टर्म्स, प्राइमर इज अ लेयर बिटवीन योर स्किन केयर एंड योर मेकअप, जिससे मेकअप आपकी स्किन पे चिपका रहे. सो आई एम यूजिंग द मिल्क हाइड्रो ग्रिप प्राइमर. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस, स्पेशली अंडर आइज, क्योंकि यहाँ पे आपका कंसीलर सबसे ज़्यादा क्रीज होता है. द वन थिंग अबाउट माई करंट मेकअप रूटीन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इज आई यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस इज माई जॉब एंड आई लाइक टू ट्राई अ लॉट मोर प्रोडक्ट्स. मैं अपने कॉन्टेंट के थ्रू कभी भी आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि इतने प्रोडक्ट्स होने ज़रूरी है मेकअप करने के लिए. यू कैन बी अ मेकअप लवर एंड जस्ट हैव वन प्रोडक्ट, दैट्स फाइन. अब हम लगाएंगे कलर करेक्टर. कलर करेक्टर क्या होता है, आपको कौन सा शेड लेना है, उसके लिए मैं अगेन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा. बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग दिस डीप पीच शेड ऑफ कलर करेक्टर. दिस इज द हाउस ऑफ मेकअप स्पॉट ऑन कलर करेक्टर. हालत थोड़ी बुरी है, बट दैट जस्ट मीन्स दैट आई यूज इट अ लॉट गाइस. जो लोग मेकअप रेगुलरली यूज करते हैं ना, उनका मेकअप हमेशा ऐसा ही दिखता है, सो डोंट जज, ओके? I'm using brush number 4 from Tan Beauty. It's like an eyeshadow blending brush, but I just use this for everything under my eyes because I think this is the best thing. हमेशा प्रोडक्ट अपने हाथ के पीछे लेके फिर इसको ब्रश में लेता हूँ ऐसे. जहाँ जहाँ पे भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, नो एनीथिंग डार्क लाइक डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन अराउंड द नोज, एनीथिंग, हम इसको वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे करके ब्लेंड करेंगे. I will make another video on color corrector. I also apply color corrector here on this part, वरना eyes थोड़ी रकूनिश लगती हैं. I'm just lightly feathering it out. Now color corrector सिर्फ ऑरेंज नहीं होते हैं. अगर आपके पास कोई रेड एक्ने है, रेड स्पॉट्स है, तो उसके लिए आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज करते हो. ये ब्रश बाय सेफोरा, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा है, so I won't be able to tell you. This green color corrector is from Lakme. And now you see this red pimple. I'll just dab a little bit of green on this red. और वो रेडनेस एकदम खत्म हो जाएगी. वी विल कंसीलर इट विद अ कंसीलर लेटर. नाउ विल यूज अ कॉन्टोर. दिस इज द लमेल बीबी कॉन्टोर इन द शेड टॉप. नो कॉन्टोर ब्रॉन्जर में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग अ कॉन्टोर. इट्स दिस मडी ब्राउन शेड, लाइक अ ग्रेइश ब्राउन, टेपर्ड फ्लफी ब्रश. दिस इज बाय मॉर्फी एंड देयर इज नो नेम, sorry. So I am first taking it on the brush and just dabbing it so that it's on the brush evenly. Here under my cheekbones. अगेन कॉन्टोर प्लेसमेंट वगैरह उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ आई डू माई मेकअप. सो व्हेन आई लुक इन द फ्रंट, आई वांट द शैडो टू बी हियर, दिस राइट हियर, एंड आई विल ऑल्सो गो अ लिटिल टू द साइड्स ऑफ माई चीक लाइक दिस, ताकि ये विड्थ थोड़ी कम हो जाए. ऑल्सो हम जब भी कॉन्टोर, ब्रॉन्जर, ब्लश अपने फाउंडेशन से पहले लगाते हैं, उसको अंडर पेंटिंग बोलते हैं. इट्स अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली टेक्निक, क्योंकि अगर आप ये अपने फाउंडेशन के ऊपर लगाओगे, इट माइट गेट टू मच, इट माइट रूइन योर मेकअप. सो यू कैन ऑल्सो डू इट बिफोर योर मेकअप. नाउ अगेन ऑन दिस साइड, जस्ट गोना अप्लाई इट हियर. आई डोंट नो इफ यू कैन टेल, बट इट्स क्रिएटिंग दीज शैडोज ऑन माई फेस. एक्चुअली मैंने गलती करी, मुझे उस पर पहले कंसीलर लगाना चाहिए था. एनीवे, अब मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर करूँगा इसी से. मेरी नोज़ मोस्टली नीचे से वाइड है, तो मैं मोस्टली नीचे ही कॉन्टोर करता हूँ. Like you want to pinch your nose from here, that's exactly where you apply the contour. I want to lift my nose, which means मैं इसके नीचे contour लगाऊंगा ताकि ये हल्की सी उठ जाए.
I mean, actually नहीं उठेगी, but it's just like illusion. And don't apply too much because then it'll start looking muddy and grey. House of Beauty Zoom In Concealer in the shade MD01. ये जो concealer shade है, ये मेरी skin से बिल्कुल match करता है. It's not light or it's not dark. Again, color corrector वाला brush जो मैंने Tan Beauty का use किया था. I'll just take this वाला pimple conceal करके I want to show you how this just brings it back to my skin color. जहाँ हमने color corrector लगाया था under the eyes, उसके ऊपर कंसीलर लगा लेंगे बहुत हल्का, just to hide that orange tinge. I take my time with makeup because I think if you want your makeup to look professional, you also have to give it that much time. Of course, I'll also make tutorials on how to make it easier and quicker. I also know that not everybody is a content creator, not everybody has the time to do their makeup for like 30 minutes. So मैं delusional नहीं हूँ, don't worry. I know most of you don't have this much time. I will make other videos for you, but I just wanted to get started with my YouTube journey. So I just did what's the easiest for me, which is doing my own makeup the way I do it. This is the color corrector. This is color corrector plus concealer, and I'm not taking a lot of concealer, okay? I'm literally just taking itna. If you just put concealer directly under your eyes ना, वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है. I hope you can see कि इन shadows से मेरा face थोड़ा slimmer लग रहा है, थोड़ा ऐसे मॉडल वाला लुक आ रहा है जो दिल्ली का हर लड़का अपनी स्नैपचैट स्टोरीज पे करता है ऐसे. एनीवे, हूँ तो दिल्ली का ही ना. क्लिनिक इवन बेटर क्लिनिकल विटामिन फाउंडेशन, डॉट इट ऑन द एरियाज जहाँ तक मैंने अभी तक कुछ नहीं लगाया, लाइक ना कंसीलर, ना कॉन्टोर, नथिंग. These empty areas that we've left, okay? That's where I'm going to put my foundation first. This really ensures कि आपका मेकअप प्रॉपर एक सिंगल लेयर में आए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप ना हो. The shade is light medium warm too, okay? Sorry. This is the Dao Beauty blending brush and just dab it, okay? I'm not dragging it, I'm just doing this. जहाँ फाउंडेशन लगाए वहीं पे इसको बस ब्लेंड करते जाओ. थोड़ा बहुत कहीं अनब्लेंडेड रह गया तो आई एम सॉरी. मुझे आदत नहीं है रेयर कैमरा से शूट करने की, बिकॉज आई कांट सी व्हाट आई एम शूटिंग. जो भी ब्रश पे अभी प्रोडक्ट बचा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू लाइटली डैब इट ऑन टॉप ऑफ माई कॉन्टोर, ताकि वो कॉन्टोर हल्का सा लाइट हो जाए. सो नाउ यू कांट रियली टेल कि कॉन्टोर लगाया है, बट यू डू सी दोज शैडोज, यू नो. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा करेक्टर और कंसीलर थोड़ा हिल गया है यहाँ से. सो जस्ट गोइंग टू क्विकली टेक सम मोर कंसीलर एंड टेकिंग दिस ब्रश I am going to apply the concealer only on those spots. इसको spot concealing बोलते हैं. You need more concealer, you can always add more, but I prefer doing this with a fluffy brush ताकि वो उसकी layer काफ़ी thin हो. Also, I am not taking it all the way up to my waterline, I am stopping somewhere here. I found this eyeshadow stick by NARS, okay? It's called Adults Only, and this is like my exact skin tone, and it's an eyeshadow stick, so it won't move a lot like a concealer would move. तो मैं अब इस eyeshadow stick को ही अपनी eyelid पे हल्का सा बस ऐसे एक बार ऐसे करता हूँ. And you can also use your concealer, there's nothing wrong with that. Like I said, I have more products, so I use more products. आँखें suddenly bright हो गई. Compare this to this. I want to brighten up my cheekbones a little bit so that मेरा face थोड़ा और चिजल लगे. This is an optional step. This is the NARS Radiant Creamy Concealer in the shade Medium 1.2 Toffee. And this is like one shade lighter than my skin. Fluffy brush. And जैसे बहुत सारे लोग अपनी under eyes brighten करते हैं, मैं under eyes brighten नहीं करता. मैं ये area brighten करता हूँ. This front of the cheek and then going into my cheekbone. And then I just blend it where it is. Just like this. This creates like a really nice 3D effect on my face. How do I say it? Like, can you see this side looks flat, but this side looks a lot more 3D, like there's more volume in this cheek. Here, it kind of like adds some life to your face. As a beginner, if you don't want to do this, it's okay. This just gives your face that like slight bit of like a lift. Now I want to use this at the center of my nose, but that brush was too big, so I'm going to take this one, and I like to. This is basically like a matte highlighter. A lighter concealer is like a matte highlighter. This will make my nose look a lot sharper. Can you see? I hope you guys can see because I can't see. Take a very thin brush,
like this. Take it. I like to carve out the arch of the brow from under like this. I'm sure you can already see what that's doing. That's lifting my eyes. And I always do this because my eyebrows are a little droopy and my eyes are sunken, so I don't really have much space on my eyelids. But when I do this, I instantly create like an eyebrow lift. And my face looks more 3D and lifted. Very subtle trick, but it always works. Very, very, very important to set your makeup. Otherwise, it will crease. This is the Charlotte Tilbury. This is the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder in the shade 2, medium. And the same eyeshadow brush, I use this brush so much. And I'm just going to set my under eyes with it. इससे concealer crease नहीं होता है. I don't powder my entire face because I like that slight dewiness. I do strategic powdering, and strategic powdering is another technique that I follow, which again, I'll make another video on it. But basically, even if you don't want to powder the whole face, definitely powder your under eyes always, always. What we're going to do is we contoured here, okay? And we applied the highlights here. अब इन दोनों के बीच में we're going to bronze. This is by Makeup Secrets and it's called Contour Angle Brush SF14. It's a tapered fluffy brush. The Charlotte Tilbury bronzer in the shade 2. I'm going to use this to bridge the gap between the foundation and the contour. Right here and on the sides of the cheek. Like right here. Yeah. This is what adds that sort of golden sun-kissed sort of glow to your face. Sometimes I like to go really bold with my bronzer, but most of the times I like to keep it subtle. But गलती से अब bold हो गया है तो इधर भी bold करना पड़ेगा. I also like to take some on my finger and just lightly bronze the sides of my nose. इससे contour थोड़ा और effective लगता है. If your forehead is small, then bronze using a smaller brush. If your forehead is like a 5 head like mine, then go all out. This outer warmth to your face and the center of your face will look highlighted. It looks beautiful. एक तो I'm itching to give you every little information about every little product in one video जो नहीं होने वाला है. So yeah, I'm just too excited to be doing this, guys. And I have a lot to say. I have a lot to show you. I have a lot to try out, everything. Anyway, so this is my makeup right now. This is my go-to makeup. I don't always apply blush. I don't always apply highlighter. I like this kind of finish, which is like radiant, not really dewy. Mascara, okay. Stays 9 to 9 mascara. And this is not like a very thick formulation, so doesn't look very obvious. Like thankfully, I have great eyelashes. All the girls are jealous, I know. So I don't want to like do a dramatic thing because that's not an everyday thing for me. What I just do is I just lightly apply it on the ends of the eyelashes. Just like this. हल्का सा definition मिल जाता है. And yeah, I think that's about my makeup. I don't always fix my makeup. It depends on how long I'm going to wear it for. This is the MAC Fix Plus Stay Over Setting Spray. And बस भाई free में मिला है तो मतलब लगाते ही रहोगे. So that is my makeup. I also have to see how it looks like in this light. This is my first YouTube video in like a professional lighting setup, so it will get better. The background will get better. I just wanted to get started because अगर मैं ये सब में लग जाता तो फिर मैं कभी नहीं शुरू कर पाता. You guys have no idea how difficult it was for me to even film this video, and it sounds stupid coming from a creator because this is my job, but for the longest time I was intimidated by just, you know, starting a YouTube series because सब लोग YouTube पे इतने प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं वगैरह वगैरह, और मुझे गैजेट्स नहीं समझ आते हैं, मुझे कैमरे चलाने नहीं आते हैं, मुझे एडिटिंग नहीं आती है ढंग से. All I know is how to film through my phone, and that's exactly what I'm doing right now. But I will up the production quality dheere dheere, don't worry. Just be with me. I'll crack it. I promise you I'll crack it. If there's anything specific as a beginner that you want to watch on my YouTube channel, please tell me in the comments below. मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. If you enjoyed watching this video and my buck, please comment down below. Please like the video. Please hit the subscribe button. And yeah, I mean, it would be very encouraging for me to keep going and make more YouTube videos. I guess I'm back on YouTube.